लिए, मगर पिछले साल जो था वो 350 करोड़ का था। इस साल थोड़ा कम हुआ है। 350 करोड़ जिस टाइम था, 1400 टाइगर को बढ़ा के वो लोग 3000 टाइगर कर चुके हैं। मगर अगर पैसा अगर कम होगा तो सभी कभी ना कभी टाइगर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर ये देखा जाए तो हाथी भी इतना है, मगर इस बार हाथियों के सुरक्षा के लिए, हाथियों के लिए खर्चा करने के लिए 35 करोड़ ओनली दिया गया है, पर लास्ट टाइम उसके लिए 70 करोड़ दिया गया था। ये जो 35 करोड़ का भी हम लोग बोल रहे हैं, ये शायद अभी तक, मैं तो सितंबर में भी बात की थी, सितंबर तक भी हमारा जो सब बजट था वो बजट नहीं पहुंचा था। अगर बजट भी जो जितना, एक तो कम बजट होता है, अगर दूसरे देखा जाए अगर बजट इन टाइम में नहीं पहुंचेगा तो सबके लिए फिर भी प्रॉब्लम होता है, काम करने के लिए प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, 18-19 में 350 करोड़ बजट था और तभी बैघ्र जो टाइगर कंजर्वेशन है वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हुआ था। इस हिसाब से अगर देखा जाए जो ट्रेन और हाथी और टाइगर के हिसाब से ट्रेन लाइन में आपके सबके नज़र में आया होगा, ज़्यादातर हाथियों का डेथ हो जाता है ट्रेन लाइन से कट के। हम लोगों को उसको बहुत जोर से ध्यान देना चाहिए किस तरह से कि वो जो उनके जो यातायात का रास्ता है उनको किस तरह से अंडरपास बनाना चाहिए। जो हमारा देहरादून का जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ना, वो इसके विषय में प्रपोजल भी दिया था। अगर देखा जाए पेंच टाइगर रिजर्व जो आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किस तरह से अंडरपास किए गए हैं, NHI दोनों स्टेट मिलकर, वहाँ पर देखा जाए तो टाइगर को भी सेफ रखा जा सकता है। इस तरह से अगर उड़ीसा में भी NHI के जरिए अंडरपास, जहाँ जहाँ हाथी के ऊपर ट्रेन, हाथी जाने आने का रास्ता है, वहाँ पर अगर हम लोग NHI के हिसाब से, NHI से मिलके गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा उसको सपोर्ट करेगा और वहाँ पर अगर अंडरपास बनाया जाता है तो कम से कम जो हाथियों को भी हम लोग सेव कर सकते हैं। और एक बात है, ये जो हाथी है ना, हाथी क्या होता है ना, जो झारखंड, हम लोग हाथी और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट उड़ीसा में ज़्यादातर दिखाई देता है। इसके वजह से झारखंड में जो डलमा है एरिया, वो डलमा अंचल से, वो एरिया से पश्चिम बंग होते हुए बांकुरा और मेदिनीपुर से बहुत सारे हाथी उड़ीसा में चले आते हैं। अगर देखा जाए वो मयूरभंज जिला है जो हमारे राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का जिला है, अगर वहाँ दिखा जाए मयूरभंज में रास गोविंदपुर और बेतनटी रेंज जो उसमें, और देखा जाए तो बालेश्वर की जड़ेश्वर और निर्गिल रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा हाथी वहाँ पर आते हैं, वो सारे खेती बाड़ी नष्ट कर देते हैं। किसान बेचारा क्या करे? अगर देखा जाए जो वो फसल लगाता है, जब वो काटने का वो बोता है कितने मुश्किल से और इतना परिश्रम करता है, फिर उसका सब कुछ परिश्रम खत्म हो जाता है जब हाथी आकर उसका जो सुनहरा फसल है उसको सारा नष्ट कर देते हैं। वो मेरा ये सुझाव है, अगर बिल में इतना सारे सब काम है तो देखा जाए तो हाथी को पहले देखना चाहिए कि वो क्यों अपना जो स्थान है वो छोड़कर दूसरा स्थान जाता है। शायद वहाँ पर उनको ठीक से खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनका खाने के लिए अगर प्रावधान वहाँ पर करना चाहिए जो डलमा में, और वहाँ पर अगर क्या पानी है, पानी कम है या खाना कम है, किस तरह से वो लोग वहाँ से निकलकर वेस्ट बंगाल के जरिए फिर हमारा उड़ीसा आते हैं और ख़राब होता है सारा चीज़, उसको देखना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा गुरुत्व देना चाहिए कि वहाँ पर कैसे उन लोगों को रखा जाए। पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि एक सर्वे भी होना चाहिए। पहले हाथी लोग कितना दूर चलते थे खाना खाने के लिए, अभी हाथी कितना दूर चलते, इसका मतलब कहीं खाने के लिए कम होता है उनके आसपास। और ऊपर से अगर हाथी लोग चलते रहते हैं, जो स्टेट होके वो लोग जाते हैं, उन स्टेट को लेके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जब हाथी आते हैं चल के, वो भी खाना खा के भी चले जा सकते हैं, मगर हम लोग उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। जब जहाँ मिल जाए उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी
बनाया जाएगा तो कम से कम छेड़खानी नहीं होगी। हाथी लोग अगर आएंगे भी वो अपने रास्ते से भी चले भी जा सकते हैं। ये बहुत सारे ये है, मगर हम लोग की स्टेट में हम अभी भी बोलते हैं कि स्टेट में हमारा जो बिजू पटनायक के नाम से माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके नाम से हम लोग उनको अवार्ड करते हैं। कम से कम ऐसा अवार्ड होना चाहिए सारे भारतवर्ष में, जो आगे बढ़ के जो लोग वाइल्ड लाइफ को और फोना और फ्लोरा को जो लोग प्रोटेक्शन देंगे उन लोगों को अवार्ड होना चाहिए। और देखा जाए तो हमारे फ्लोरा और फोना को भी हमारा प्रोटेक्शन के साथ साथ सबके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अभी बोल रहे थे गाजर घास, हमारे यहाँ भी गाजर घास दिखाई देता है। जो गाजर घास सारा जमीन का है ना, जो खेती होता है वो सारे जमीन के खेती को नष्ट कर देता है। ये हमारा शेड्यूल एरिया, हाँ हम एक मिनट में साथ जो शेड्यूल एरिया दिया गया है बहुत सारे अच्छे विचार भी है इसमें। जैसे आर्म्स का जो रिन्यूअल होने के लिए 5 किलोमीटर था वो भी 10 किलोमीटर कर दिया गया है, ये बहुत अच्छा है। मगर जो खेती होता है, जो किसानों का जो नुकसान होता है ना, उसके भरपाई के लिए मैं तो इसमें चाहूँगी, गुजारिश करूँगी थोड़ा अच्छे से अगर आप कंपनसेशन दे दे, कम से कम किसान भी बच जाएगा और जानवर भी कहीं ना कहीं बच जाएगा, जानवर भी नहीं मरेगा। और हमारा जो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम सबको मिलके बचाना है, ये हम सबका दायित्व है और ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का भी है हमारा भी है। हमारा सरकार कर रहा है, उड़ीसा सरकार, मैं चाहूँगी कि केंद्र सरकार का हाथ अगर आगे थोड़ा आए तो हम लोग और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। धन्यवाद श्रीमती सुल्टा देव जी। माननीय अयोध्या रामी रेड्डी जी। Sir, I want to thank you for giving me this opportunity to speak on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. Positives of this bill. The Act prescribes imprisonment terms and fines for violating the provisions of the Act. The bill increases these fines from up to 25,000 to up to 1 lakh rupees for a general violation and 10,000 rupees to 25,000 for especially protected animals. Such a provision is a good step towards reducing incidences of poaching, cruelty towards animals or any other related violations. Implementation of CITES. This bill aims to implement the Convention on International Trade in Endangered Species, an international agreement that regulates the international trade of wild animals and plants in order to prevent any threat to their extinction of the species. The bill will provide for the designation of a management authority which grants export or import permits for trade of specimens, and specific authority and scientific authority which gives advice on aspects related to impact on the survival of the specimens being traded, thus bringing us under a global agreement, and is therefore a welcome provision. So problems need to be addressed in this bill. The issue of vermin. In the Wildlife Protection Amendment Bill 21, any species falling under Schedule 2 may be declared as vermin. The bill also does not define the word vermin, thereby empowering the central government to directly declare any species as vermin. The particular species will not be covered under the Wildlife Protection Act and can be hunted or culled without restriction and once declared vermin. This specific change is projected to impact 41 species of mammals, 864 birds, 17 reptiles and amphibians, and 58 insects, as they may be declared vermin and will be subject to hunting and killing. Thus, a more scientific approach should be taken in declaring an animal as vermin. Human-wildlife conflict is another issue that needs to be addressed. This issue of vermin is a part of bigger problem of human-wildlife conflict.
Several states have reported crop loss, incidents of crop raiding, and other incidents of crop damage due to animals. However, if the central government starts declaring a lot of these animals as vermin, they would be up for indiscriminate killing. The act of killing could result in severe ecological imbalance and impact the food chain in the region. Thus, a more specific approach has to be taken up in declaration of any species as vermin, and also the human-wildlife conflicts have to be addressed in a better way. So, human-wildlife conflicts are also increasing due to habitat destruction and encroachment and the developmental works, industrialization and agricultural expansion, which leads to reduced forest cover and reduced land for wild animals. Therefore, these issues have to be addressed. In this regard, Andhra Pradesh has taken several steps involving the local community from different areas to help in reducing the animal-human conflict and ensuring protection of their wild habitat. Elephant trade is one of the issues that is effectively addressed in the state. While 43 of the Principal Act clearly provides for a ban on any sale or transfer of captive animals in their ownership, the proposed amendment bill will introduce an exemption clause to Section 43 in the case of transport of ownership of the live elephants. This exception has the potential of encouraging commercial trade of elephants, which may lead to elephants being subject to captivity and brutality. Therefore, the earlier ban should be upheld even in the case of elephants, and additional mechanism may be introduced for acquiring elephants in for religious institutions. Missing species. The species listed in all the 3 schedules of the bill is incomplete, as has been pointed out by several wildlife organizations, as well as the report submitted by the Parliamentary Standing Committee on the bill. And so, there is a need for a greater inclusion of scientists, botanists, biologists, and others in the process of listing all the existing species of wildlife. Elimination of State Board for Wildlife. As per the existing Act, there exists a State Board for Wildlife headed by the Chief Minister as the chairperson and the Minister in charge of Forest and Wildlife as the Vice Chairperson. The proposed amendment bill renders the State Board to defunct and instead provides for establishing of a standing committee of the Board for Wildlife, which is to be headed by the Vice Chairperson, that is the Forest Minister, and not more than 10 members to be nominated by the Forest Minister. Therefore, it decreases the state's involvement and ability to make decisions in matters of wildlife. Andhra Pradesh wildlife conservation efforts are worth mentioning, sir. I would like to state that this opportunity to highlight some of the successful endeavors undertaken by the Andhra government toward wildlife conservation. Tiger numbers are on the rise. The tiger numbers in the state have seen a 60% rise from 47 in the year 2018 to 75 in 2022, with 64 in Nagarjunasagar Srisailam Tiger Reserve, 9 in Seshachalam Corridor, and 2 in Papikondalu, through a process of taking censuses with a more scientific method of employing drones and cameras. We are also proud to have the country's largest tiger reserve, NSTR, in Andhra Pradesh, spread over 3,727 square kilometers. The first time the black buck survey has been conducted by the Andhra Pradesh State Wildlife Department, started the first ever survey of black bucks along a stretch of islands between the Godavari and Dhavaleswaram and Yanam, with the goal of drawing up a conservation plan to protect the endangered species. Nodal officers are being deployed, especially in places like Vijayawada, Vizag, to prevent cases pertaining to cruelty against animals. The district police have appointed a circle inspector as the nodal officer to protect animals. People may contact the officer to register complaints pertaining to cruelty against the animals or cases of smuggling. There is also an ongoing plan for upgradation of infrastructure in Indira Gandhi Zoological Park in Visakhapatnam. The state has also been focusing on rescuing the king cobras in North Coastal Andhra Pradesh with King Cobra Conservation Program, rescuing a good number of cobras in the past 3 years, to minimizing man-animal conflict across the state. The Forest Department has been working on several areas to address wildlife conservation and would appreciate the assistance of the central government in scaling up these efforts. While inclusion of sites is a welcome step, it is more focused on regulation of trade of wildlife
rather than its conservation. Protection of wildlife has to be seen along with protection of their wild habitat, and therefore we need to see the bill in accordance with the Forest Conservation Act and the Environment Protection Act. With these suggestions, we on behalf of YSR Congress Party support the bill. Thank you, sir. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया उपसभापति महोदय। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल कई बाधाओं को पार करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत वक्त लगा, हम सुनते थे कि इस पर ये काम हो रहा है, इस पर ये काम हो रहा है, इस पर यहाँ टेस्टिमोनियल आ रहा है। तो आमतौर पर मैं बधाई के साथ साथ कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे होंगे, मैं समझता हूं कि उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। पसंद आए तो ग्रहण करिएगा, ना पसंद आए तब भी ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, संग्रहण कीजिएगा। माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल का क्यों आना हुआ, क्या वजह है, ये हम सब जानते हैं। मंत्री महोदय ने अपने आरंभिक संबोधन में इस पर बातें रखी। मेरी चिंता या यूं कहूं कि दुविधा बीते 19 के बाद से, जब से दोबारा सरकार बनी है, अभी मैं एक अपने साथी से बात कर रहा था जो अक्सर मित्रवत ही रहते हैं हमारे भाजपा के साथियों के साथ। तो उन्होंने एक बात कही कि सारी बिल का मजमू कुछ भी हो, एक चीज कॉमन है, कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ वर्षों बाद अगर आप ही की सत्ता बनी रही तो राज्य नाम की अवधारणा शायद कहीं खत्म ही ना हो जाए कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स के बदले रहे इंडिया इज ए यूनियन ऑफ यूनियन। तो वो एक पहली चिंता है, जो कि सब कुछ आप जानते हैं। आप ही मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, आप ही साइंटिफिक अथॉरिटी बनाएंगे, आप ही को एम्पावर किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने एक बात कही, और जो बात उन्होंने सही कही, कि ये यूपीए के दौरान का ही कमिटमेंट था। जाहिर है हमारा कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट, बीते दिनों अंटार्कटिका वाला बिल इसी सदन से पास हुआ, कहा गया कि ये कमिटमेंट है। तो मैं सदन के समक्ष आपके मद्देनजर, आपके माध्यम से कुछ वैसे कमिटमेंट्स भी रखता हूं जिस पर फौरी तौर पर पहल होनी चाहिए, because we have largely been silent on those. Couple of them I just note. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which talks about no distinction. The Committee on Elimination of Racial Discrimination. The International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Convention Against Torture and Other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. International Convention on Elimination of all forms of racial discrimination. Blah, blah, blah. Lot many. अभी आज सुबह ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, फिर माननीय विदेश मंत्री साहब ने भी कहा, माननीय सभापति महोदय जिन्होंने आसन ग्रहण किया, G20 की बात की। एक पृथ्वी, वन अर्थ कहते हैं ना, वन फैमिली वन फ्यूचर। तो सर उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि दुनिया में दीवार गिराने से पहले अपनी दीवारें भी गिराई जाएं। अब वो एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए इसको, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी जब आप G20 में और बाकी देशों के साथ बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए एक्सचेंज की बात होगी। अब एक मसला जिसको आपने कमोबेश एड्रेस नहीं किया है पूरी शिद्दत से माननीय मंत्री महोदय, अभी सितंबर के महीने में 8 चीते आए इस देश में, कुनो बड़ी चर्चा हुई, चीते ने कब खाया, चीता कब उठा, चीता ठीक से नहीं सोया, चीता आज रात बढ़िया से सोया, अब चीते ने जवाब देना शुरू कर दिया है। तो चीतामय हो गया था पूरा देश। चीते की आवाज, चीते क्या, चीतामय। अब चीतामय देश में हम भूल गए कि सहरिया ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ। बगचा गांव के सहरिया ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया गया। तो मैं देखिए, मैं जानवर एनिमल विरोधी नहीं हो भी नहीं सकता, बहुत ट्रेनिंग मिली है, लेकिन सर ईश्वर न करे कभी ऐसी विधा हो हमें चुनना पड़े कि जिंदा इंसान उनके
उनके सरोकारों से विमुख जा कितना दूर तक हम जा सकते हैं। ये इससे पहले सर एशियाटिक लाइन आया था, तब भी ये डिस्प्लेसमेंट हुए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब तो आदिवासी हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं न धरती अपनी न जंगल अपना, और मैं तो उस डिबेट में जाना ही चाहता, वनवासी या आदिवासी कुछ भी कह लीजिए, कोई भी वासी, लेकिन उनके बसावट की चिंता अगर नहीं है, और मैं चीता विरोधी नहीं हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, मैं भी बहुत समर्थक हूं चीते का, लेकिन चीता भी ज्यादा प्रसन्न होता अगर उसको किसी का घर उजाड़ना ना पड़ता। अब आइए सर, आपकी जो अभी तक की भी व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूं, इसमें 4 मिनट बोल भी गया मैं, सॉरी सर। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स, ये मैं एक आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से, जब कभी ऑफेंस, आपने पेनल्टी बढ़ाई है, जेल टर्म बढ़ाया है, आप एक बार एफआईआर पढ़िए, किस तरह की एफआईआर लिखे जाते हैं और कौन फंसता है उसमें। बड़े एफआईआर जब क्योंकि वायलेट किया उसने इस कानून को, उस संदर्भ में कह रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय का सवाल पूछने का अधिकार है, मैं उनको यही कह रहा था कि नैरेटिव्स ऑफ हाउ ऑफेंसेस आर कॉन्स्टिट्यूट एंड द एक्शंस ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, प्लीज रीड द एफआईआर। नहीं, जो वाइल्ड लाइफ जो लॉ के वायलेशन की बात होती है, आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की आपकी अनचेक्ड पावर्स हैं, आप उस पर थोड़ा काम करो। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्पेसिफिकली टारगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये कई लोगों की जो ह्यूमन मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने भी लगातार एक बात कही है। एक आग्रह करूंगा कि दुनिया के, खास करके यूएस का भी देखा है कि एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सिस्टम, बस 1 मिनट लूंगा सर, 1 मिनट हो चुका उस तरह की जो यूएस की तरह का है एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सिस्टम हम विकसित करें। और आखिरी में कहूंगा, मैं ये कहना नहीं चाहता था, सेक्शन 1 कई साथियों ने कहा 43, हाथी पे बड़े मेहरबान है आप, मतलब मेरी समझ में नहीं आया, हाथी मेरे साथी फिल्म कितना पहले रिलीज हुई थी, लेकिन हाथी के महिमा मंडन में आपने एक रिलीजियस एंड अदर पर्पसेस, तो बाकी के स्पीसीज ने क्या बिगाड़ा है। और कभी अगर हाथी अपनी जुबान से बोल पाए तो वो भी ये रिलीफ नहीं चाहता होगा, क्योंकि हाथियों के संदर्भ में भी कहा जाता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जब उसका डिस्प्ले होता है, एग्जिबिशनिज्म की पॉलिटिक्स होती है, तो उसका क्या होता है। बहरहाल सर, मैं यही खत्म करूंगा, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए, और जैसा शुरू में कहा था, ग्रहण करना हो करिए, लेकिन चीते और हाथी की कीमत पर अपने आदिवासी समुदाय और बिछड़ न जाए। शुक्रिया सर, जय हिंद। डॉक्टर जॉन विटास। Thank you, sir. Sir, so much has been talked about the various provisions, and the Honorable Minister has concluded his initial remarks by saying that he was reciprocating to the international treaty to which we are part of. Yes. So I have no qualms about it. Sir, my concern is that there is a deliberate design in every action of this government to usurp into the powers of the states. Shivaji is here. Sir, I am astonished that my colleagues from Andhra Pradesh, Orissa, they're all welcoming this bill without understanding the so-called scheme of this government to get into the powers of the states. Bhumendra Saab, you are a nice man, though I don't agree with your politics. You shouldn't be part of this scheme of distorting the federal principles of this country. There are 3 U's. What are they, sir? One is unitary. They don't want a federal constitution. Thereafter, unitary, unilateral, and they want another thing, that is uniformity. Shivaji, you are here. He represents Tamil Nadu. Sasmiti, I was slightly, I would say, disillusioned. Your party colleague didn't even see through the game. I will come to that point, sir. I will come to the point. Tambidureji, you are also a federal man. You should understand that. Sir, in the Principal Act, Section 29 permits state governments being satisfied in consultation with the state board to authorize the chief wildlife warden to issue a permit to destroy, exploit, so and so.
Sir, the clause 11 of new amendment bill tries to take away this right of the consultation with State Board of Wildlife by proposing to substitute the same with National Board, not only infringing the cooperative federalism, the principles, but also having far-reaching consequences as the National Board can effectively block any proposal from the state. Sir, do you think that this country should be run only by the central government? You want only the union government, you dismiss all the state governments. Even otherwise, you have a dangerous scheme of destabilizing opposition-led state governments. If you can't do that, you disrupt the government, you defame the government. Even the bill camouflages your intention of taking away every right of the state government, sir. I strongly oppose this bill because of this, sir. Sir, one more thing, sir. I will come to another clause. Sir Smithji, you should be supporting my bill. You are supporting the government without knowing the nuances of this bill. Now, clause 27 of the new amendment bill proposes for adding a new proviso to section 43 of the Principal Act. Transfer or transport of captive elephant for religious. Okay, I will know. And this should be prescribed by the central government. Sir, हम कहाँ सर? आप बिहार से सर? बिहार गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है क्या सर? है? Sir, should we surrender all the powers to them? Don't we have a federal constitution? They harp on cooperative federalism every time from Prime Minister. But even for a bill like this, they get into the small nitty-gritty where the state government has some flexibility. Sir, I would say there are so many clauses which infringes on the rights of the state government. Sir, give me, this is very important. This deals with the federalism of this country. Sir, the chairman has been very liberal today. You should also talk his language. According to chairman, I am going by the rules. Declaring the vermin. Conclude. Sir, declaring the vermin. Sir, whenever we meet the minister, he says, no, we cannot allow the wild boar to be killed in Kerala because the tiger has to be given its feed. Sir, aap tiger ke liye kya? You're not for the human beings. You know the havoc being played in Kerala? See, I would say, in a single year, 88 people have been killed. Incidence of crop damage is more than 2,000, despite the fact that we have increased the forest cover. So don't blame us. We have been deliberately, consciously trying to, nurture the forest cover. But what are we being paid at? You don't allow us. Farmers are fleeing their cultivated land. Thakur Sahib, you are a farmer. Today you are being harping about the Dhartiputra, Karshaputra, what more? You don't want the farmers to survive here? I would request the Honorable Minister, he should strike a balance. He should try to make sure that the rights of the states are protected. He should also make sure that the lives and the livelihood of the people are protected, and all these clauses which are detrimental to the principles of federalism should be withdrawn. Thank you very much. Thank you. Thank you, John Britas. Mani Anil Hegde ji made a speech. Deputy Chairman, sir, I rise to speak on the Wildlife Protection Amendment Bill 2022. First of all, I'd like to congratulate the government for inserting provisions to control the invasive alien species. Sir, these invasive alien species have done irreparable loss elsewhere in the world and even in our country. These invasive alien species are not natural to our biome. Genetically modified organisms are also invasive alien species, sir. These need deadly pesticides
and herbicides. These herbicides and pesticides harm the bees. Bees are, they are they are pollinators. Because of the pollination, we get more yield. Sir, आपने हाथी के बारे में, एलिफेंट के बारे में भी इसमें जिक्र है. मैसूर के पास जो बंडीपुर फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर उस इलाके में एचटी कॉटन लोग का फसल वो उगाते हैं. वहां पर ड्रोन में ये हर्बिसाइड्स का छिड़काव होता है. वहां पर ये हाथी अधिक संख्या में वहां पर आता है कॉटन का फील्ड में, और इसके बारे में आज तक स्टडी नहीं हुआ है कि हाथियों के ऊपर ये जो हर्बिसाइड का छिड़काव के वजह से क्या हानि पहुंचा है. ये सब चीज का ध्यान में रखते हुए हमारे पार्टी का नेता और बिहार के मुख्यमंत्री जी और 2009 में उस समय का तत्कालीन एनवायरनमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखे थे जब बीटी ब्रिंजॉल का जो वहां पर जीएसी ने क्लियरेंस दिया था. और मैं आई वांट टू कंग्रेचुलेट जयराम रमेश जी, हु वाज देन एनवायरनमेंट मिनिस्टर. इन्होंने देश भर में इसके बारे में लोगों का पब्लिक हियरिंग 7 जगह पे रखे और लोगों को ऑपोजिशन को सुना, और उसके बाद उन्होंने मोरेटोरियम लगा दिए. सर, this I'm sorry, we got to know that on October 25th the GESC, Genetic Engineering Appraisal Committee under your ministry, and has given clearance for GM, genetically modified mustard. Sir, India is a center of origin, center of diversity for mustard, sir, and because of this, these will need lot of herbicides, because of which the pollinators will die, pollinators will get extinct. माननीय हेगड़े जी, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं. लेकिन मेरा ये कहना है कि चर्चा जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट पे है, जीएम क्रॉप्स पे नहीं है. उसके लिए अलग से प्रश्न आएगा, मैं जवाब दूंगा. आप पॉलिनेटर्स खत्म हो रहे हैं, बीज खत्म हो रहे हैं, इसके जिसको हर अमेरिकन टेक्नोलॉजी आप लेके आ रहे हैं. आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं. माननीय हेगड़े जी, द सब्जेक्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक, मैं एक आधा मिनट. सो माय अपील टू यू सर is that GMOs also should be listed as invasive alien species, and I request you, I appeal to you to take care that these invasive alien species are not introduced in the country, and because based on the precautionary principle, I appeal to you through the Deputy Chairman that we should not rush through the bill in a hurry. Thank you. माननीय जोस के मनी. Thank you, sir. Sir, this Wildlife Protection Bill amendment has a lot of concern in general and also in particular to the state of Kerala. As you know, Kerala is a small strip of land of the national level extent. 1.1% only Kerala has. And population, densely populated about 3.13% when you compare to the national level population. And we have about the forest area of approximately 27-28%, which is more than the national forest. And also the forest cover, it is 54% when you compare to the national level. The government of India is aiming at 33%, we have 54%. Sir. So it is evident that the state government
or the Kerala state or the farmers, the people protect the forest and also the environment. Now, this bill has totally neglected the human-animal conflict is neglected by the bill. Kerala is one of the densely populated states in the country. It has, as I said, the forest cover is very high. Since 2011, 34,875 instances of wildlife conflict were reported in Kerala. During the last decade, more than 1,300 humans lost their lives and more than 7,000 injured. This is what has happened in Kerala alone, sir. Now, the Wildlife Protection Act states the meaning is to protect the animal from the human. That is presuming that the animals will be inside the forest. Now it is about 50 years back, actually it was introduced in 1972. For more than 7 decades have lapsed. The situation has changed. Now the animal has started coming to the habitat area and attacking the human beings. Suppose for self-protection, if we kill the animal, we are behind the bar and the animal is protected. As the Bita said, if you ask the government why, even if you take up the wild boar, it's a huge population. The wild boar actually after the 2018, the flood, you see 40% of the wild boar animals are not in the forest, they have come to the habitat area. Now it is food for the tiger. Actually, the tigers are coming out to the habitat area to catch the wild boar and they attack the human beings. This is the fact of life actually. Now, for this, we need to amend some suggestions are there to the government. That is one, declare the animals like wild boar as vermin, as their population has multiplied in 1,000 times, now lives in human habitations. Government should amend the Wildlife Act 1972 to allow the state government to declare wild animals as vermin as when the situation arises. Second, based on the existing wildlife law, people are not able to protect themselves against the attack from wild animals that encroach into their life space or agriculture lands. Amend the law to give protection to people who attack animals in self-defense and exempt from their charges. In lines of Motor Accident Claims Tribunal, set up a Wildlife Accident Claims Tribunal for granting adequate and timely compensation for the loss of life and agriculture crop due to the wildlife attacks. The last point, in order to prevent further loss of human lives and to control the damage caused by the wild animals in areas outside the forest. Thank you. 500 meters interior from these should be forest boundary, human sensitive zone, so as to restrict wild animals at the HSZ, that is human sensitive zone border. Thank because you. See that Kerala House, the forest cover of 54%. Shri Kanak Medla Ravindra Kumar ji, please. And the forest. Shri Kanak Medla Ravindra Kumar, area should now be you have to inside speak. so Please. that animals does not Please, come no, to the it's not going on habitat record now. Please. Shri Kanak Medla Ravindra Kumar ji. Sir, thank you, Chairman, sir, for giving this opportunity. Sir, we have to discuss with this act, not in the Indian scenario, we have to discuss in the global scenario this aspect is concerned. Sir, I would like to state that the ecological security and the environmental security means the protection and the safety of the wild animals, birds and plants, they are also part and parcel of the ecosystem. That's why it's a prime responsibility that each and every citizen, as well as the entire society, to see the wildlife, especially wild animals, birds and plants are protected. Security and safety of these things have to be taken to be prime consideration. Sir, clause 2, subclause 6, prior to this amendment, there was a definition which was, it included cattle. Subsequently, in the 1991, the amendment, it was omitted. At the same time, there is a part 1 schedule also that is termed elephants have to be protected. So my suggestion is
that is to be incorporated in the schedule because Asiatic elephant is there. It includes the Asiatic elephant but excludes the tamed elephant so that it can be protected. Sir, coming to the another clauses in concern, clause 3 of the bill, which talks about invasive alien species. I will give an example from my home state of Andhra Pradesh, how introduction of an exotic plant spices 1980s in Seshachalam Hills. It covers, it has distributed ecological balance in Chitturu, Kadapa and Nelluru districts of Andhra Pradesh. Now we have to replace it with native spices. Otherwise, the entire biosphere of Seshachalam, which is home for several epidemic plants, like lead sand, cycas, etc., would be destroyed. Clause 3, which deals with, it's a good move, sir. Secondly, Appendix 2, Schedule 4, Item 444, it has mentioned that Petrocarpus, it is the scientific name for red sandal tree, which is available only in Seshachalam forest in Chitturu, AP. It is smuggled out of the country by local smugglers. You might have seen, if you saw the movie, that there is a recently movie also taken in Pushpa. And sir, it is smuggled on our country, and any action for smuggling of red sander is under Customs Act, not under the Wildlife Protection Act. It is because the tree is not in a scheduled species. So I suggest for consideration of the Honourable Minister to include the red sandal under the relevant schedule with the help of the taking action under the legislation remedy. Thereby we can reduce smuggling and save the red sandal from extinction. Because in Andhra Pradesh is a large, huge amounts, crores of rupees are getting by the smugglers, and the local government is also not taking care of to curb that practices. Sir, the next point are clause 62 of the bill empowers the government of India to declare any animal as vermin. Sir, we call it vermin as a nuisance animals, as they destroy our crops and kill livestock and spread diseases. It does not mean that we kill them and left and right. Nothing has been mentioned in this clause on the process to be followed identified by animals vermin. No transparency and accountability process based on ecological and social evidence has been prescribed. Sir, the movement of wild animal is declared as a vermin. It loses and its legal protection, and such animals become a domestic animal and can be killed, tamed or traded. So I feel it is ecological consequences which led to imbalance. Even the Supreme Court, please conclude. Animal Wildlife Board also that are given, categorically given certain directions. So the bill proposes to increase the penalties. That is also welcome. So, sir, these are the points I wish to bring to the notice of the Honourable Minister and would act accordingly, take the appropriate suggestions. Thank you. Thank you. Sri Ramji. धन्यवाद श्रीमान जी कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 के बीच में जो सरकार के द्वारा माननीय मंत्री जी ने कहा कि साइटिस के बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा सरकार के द्वारा, जिसमें कुछ शंकाएं मन में आती हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या अपने वाइल्ड एनिमल्स का या प्लांट्स का कोई ट्रेडिंग करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या कोई व्यवस्था इसके अंदर है, क्योंकि साइटिस में ये बात देखी गई है कि कहीं ना कहीं से पूरे देश वर्ल्ड में लीगल या इलीगल रूप से वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स का भी एक ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है। इस पर कई सारी संख्याएं हैं। और दूसरी श्रीमान जी, माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि कई सारी चीज़ें देखने को मिली कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल के तहत जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं या वनवासी जंगलों में रहते हैं उनको विस्थापित करने की व्यवस्था है और उनको सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। लेकिन इस 10 लाख रुपए में ना तो वो जंगल से बाहर जाके अपना घर बना सकता है, ना ही अपने जीवन का भरण पोषण की कोई व्यवस्था कर सकता है। इसको देखते हुए माने आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगी इस व्यवस्था को बढ़ा के 10 लाख के बजाय से 25-50 लाख रुपए देने की व्यवस्था की जाए। और साथ ही अगर ये जंगल जमीन किसी उद्योगपति के लिए खाली कराई जाती है तो उसके लिए कोई कठिन से कठिन नियम कानून बनाए जाएं ताकि ये जंगल और जमीन में रहने वाले लोगों को सिर्फ प्रॉफिट के लिए उन्हें नहीं हटाया जाए। और चूंकि अभी एक ऐसी घटना देखने को मिली है छत्तीसगढ़ के जंगल में हासदेव अरण्य,
हासदेव अरण्य को बचाने के लिए पूरे जंग वहां पे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई लोग एक हुए, लेकिन वो अपने हासदेव अरण्य को नहीं बचा पाए। उसमें 4.5 लाख पेड़ काटने का आदेश हुआ, 10,000 आदिवासियों को विस्थापित करने का आदेश हुआ, जबरन फोर्सफुली उनको विस्थापित किया गया, जबकि वो नहीं चाह रहे थे। उसके बाद वहां से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वहां के वन संपदा के साथ ही जो वहां पे भूमि संपदा है, खनिज संपदा है, उसका दोहन करने का काम करती हैं। ये चीजों को मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं, कोई ठोस व्यवस्था की जाए, ताकि उनका जो वन आदिवासी या वनवासी हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको बचाया जा सके। साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं अपने लखीमपुर खीरी की तरफ लाना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी का जो अधिकतम क्षेत्र है वन आच्छादित है, और तराई क्षेत्र होने की वजह से वहां पर कई सारे जीव जंतु वहां पे जंगलों में देखने को मिलते हैं। टाइगर भी हैं, भालू भी, हाथी भी हैं, और वहां पे चीतल भी है, हिरण भी, तमाम तरह के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। और इन वन्य जीवों का और मनुष्यों का वहां पे रहने वाले लोगों के बीच में तमाम कई बार आपस में उनका एक द्वंद्व होता है। उसमें कई सारे हमारे लोगों की जानें गई हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर 6 लोगों की मौत टाइगर के द्वारा हुई है, और वहां पे सरकार की तरफ सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा है, जबकि वहीं महाराष्ट्र के अंदर कोई अगर वन्य जीव के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो 20 लाख रुपए मिलता है। तो ये प्रावधान सरकार लेके आए कि एकरूपता होनी चाहिए। एक मनुष्य की जो जीवन है महाराष्ट्र में 20 लाख रुपए है, उसी मनुष्य का जीवन उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए का है। इस पर भी एकरूपता होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी की तरफ, आपकी तरफ से ध्यान देना चाहूंगा। थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं लखीमपुर से ही हूं तो 2 बातें मैं लखीमपुर कर रहा हूं। एक तो ये बात, तो दूसरी बात कहूंगा कि तराई क्षेत्र होने की वजह से वहां पर बहुत सारे वेटलैंड इकट्ठे हुए बन जाते हैं बरसात के समय, और उन वेटलैंड के में तमाम तरह की जैव विविधता उत्पन्न होती है। तमाम तरह के बाहर से साइबेरियन पक्षी आते हैं जो ठंडक में वहां पे रहते हैं, यहाँ तक कि सारस और हंस जैसे पक्षी भी वहां पे अपना बसेरा बनाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े भूमाफिया अधिकारियों से मिली भगत करके उन वेटलैंड को पार करके वहां पर प्लॉटिंग करते हैं, मकान बनाते हैं। इसको भी रोकने की व्यवस्था मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राम जी। माननीय ऑनरेबल श्री जी.के. वासन। It's our collective responsibility to protect the environment, sir, which is essential for the survival of flora and fauna, sir. Sir, I would seek a clarification from the Honorable Minister, sir. One aspect, sir, traditionally the declaration of wild animal and vermin has been done without any scientific assessment or study. In the case of this bill, sir, it could now mean that species such as striped hyena, Indian fox, Bengal fox, etc., could be declared as vermin very easily. This could have far-reaching consequences for the environmental ecosystem and may result in an imbalance. It could also affect other endangered species, which could be harmed due to traps set out for hunting and sale of vermin. Therefore, sir, there is a need for clarity on what types of animals can be declared as vermin. The overall sentiment and direction of the bill is something that no well-wisher of the country and the flora and fauna can deny. With these words, sir, I welcome the bill. Thank you. Thank you. माननीय अब्दुल वहाब जी। ऑनरेबल अब्दुल वहाब नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य जी। माननीय वीरेंद्र प्रसाद वैश्य जी नॉट प्रेजेंट। माननीय विनय विश्वम जी। ऑनरेबल विनय विश्वम। सर थैंक यू। ये वाला चल रहा है। ये वाला चला। अच्छा ठीक। दोनों चलता है। सर, I question the purpose of the bill and the intention of the government behind the bill. When I question the intention, I would like to remind the government and the Honorable Minister the famous quote from our traditional scripts, Ega Nidame Logam. The whole universe and the world is one place for a bird's house,
needam. That was the concept of our forefathers. I share that view. A communist I am, I share that view. The universe and the world is ega needam, in which all of us are supposed to live together. When we say all of us, it doesn't mean that you or me, the humankind, the rich people. No. This earth has a place for the wildlife also, for the plants also. All living beings should have a place there. That's the concept. If you allow me to quote Karl Marx, I will quote from him. Any quote? Karl Marx, quote. Of course. Sir, Marx wrote, man lives on nature, means that nature is his body, with which he must remain in continuous interchange if he is not to die. That means physical and spiritual life is linked to nature, means simply that nature is linked to itself, not man is a part of nature. This is the importance of nature, sir. I am asking you whether this idea is being shared by your bill. Indian scripts, modern scientific outlook, all are ignored. Sir, again from Marx, even an entire society, a nation, or all simultaneously existing societies taken together are not owners of the earth. They are simply its possessors, its beneficiaries, and have to bequeath it in an improved state to succeeding generations. That's our duty. So we have to bequeath it to the coming generations. And we of today are not fulfilling that. This government is committed to Paris Agreement. We chair the G20. In that way, we are committed to biodiversity, to the environment, in that way to wildlife also. I'm asking the minister very politely, many of the provisions of this bill contradicts the Biodiversity Act, many of it. If we have time, we can explain it in big. So this is a trade-oriented act, amendment, trade-oriented. You are mainly for trade. Trade is for profits. Wildlife and all its subsidiary parts are for trade, for international trade. You talk of cities. Cities is regarding trade only, sir. The full form is clear. International trade in endangered species of wild fauna and flora. You asked here, what about GM? Vinay Viswanji, please Sir, conclude. this actually affects the lives of the Please wild conclude. bees also. Please conclude. Bees. Please. Bees are important for the country, for the please economy conclude. also. All these basic approaches are forgotten in this bill. So I request you, please reconsider this. Refer I'm calling this bill now, to a please, standing. please No, conclude. sir. Please, all of Please you have refer taken this more bill time. to standing Please. committee. Please. Support me, sir. Please. I request him to refer this bill to a standing committee for further Thank you. debates, discussion, Thank you. to make it foolproof. I Thank believe you. that he will agree to me. Thank you, sir. Thank you, Vinay Viswanji. माननीय राकेश सिन्हा जी. उपसभापति महोदय, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल अमेंडमेंट बिल के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वेल ड्राफ्टेड, वेल थॉट एक बिल को उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है। जिस बात की चर्चा आज से 20 वर्ष पहले होनी चाहिए थी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज,
यह समझौता 1973 में वाशिंगटन में हुआ था। भारत ने 1976 में रेटिफिकेशन दिया था। 1979 में इसका एक अमेंडमेंट हुआ था। 76 से लेकर लगभग 40 वर्षों तक हम इस पर ध्यान नहीं दिए। उपसभापति महोदय, भारत को कई बार फटकार मिला। 183 देश इस कन्वेंशन में शामिल हैं। 182 देशों से भारत के ट्रेड पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी गई थी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, जो अब तक उपेक्षित थी, लेकिन जो मानव अस्तित्व के लिए, पृथ्वी के अस्तित्व के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, जो राजनीति का हिस्सा नहीं है। नई दिल्ली में चाहे जिसकी भी सरकार हो, पर्यावरण मंत्री और प्रधानमंत्री जो कोई भी हो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो मानव के अस्तित्व से, मानव के हित से और पृथ्वी के संरक्षण से जुड़ा होता है, वो राजनीति का विषय नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिस बात की आज चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उस बिल पर आने से पहले मैं उन दो बातों की चर्चा करूंगा। आज विपक्ष से एक बात आई, यह बिल संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है। कैसे प्रतिकूल है उसका कोई तार्किक बात नहीं कही गई। संघीय व्यवस्था कोई नारे की चीज नहीं है। संघीय व्यवस्था की पवित्रता को यह देश जानता है कि राज्य और केंद्र के बीच हमारा संबंध एक पवित्र संबंध है। वह रिश्ता कोई अपॉर्चुनिज्म का नहीं है, अवसर का नहीं है। वह रिश्ता संवैधानिक बातों से सिर्फ स्थापित नहीं है, वह हमारी भावनात्मक बातों से स्थापित है। भारत ने 60 वर्षों से इन्वेजिव प्लांट्स और एनिमल्स के कारण 127 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया है 60 साल में। 127 बिलियन का तात्पर्य आप समझते हैं? खरबों रुपया आपने खो दिया। जिन ट्राइबल की बात कही जा रही है, इन खरबों रुपया में तो जिस सहरिया ट्राइबल की चर्चा करते हुए कहा गया कि चिता के लाने से वे ट्राइबल खतरे में आ गए हैं, उनको विस्थापित कर दिया गया है। गलत सूचनाओं के आधार पर सदन में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सहरिया ट्राइब वहां पर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। जो चिता पहली अंतिम बार 1947 में देखा गया, 1952 में ऑफिशियली कहा गया कि चीता की समाप्ति भारत से हो गई, 8 चीता को लाया ही नहीं गया। हमारा जो पृथ्वी का परिवार है, जो हम अर्थ को मां मानते हैं और अर्थ में रहने वाला, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे मनुष्य हो, उस भारतीय संस्कृति और परंपरा में जो हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस चिता को लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने जब किया, तो सहरिया ट्राइब के कुछ परिवारों को व्यवस्था के तहत, 20 से 22 परिवारों को व्यवस्था के तहत वहीं पर उन्हें विस्थापित किया गया। और सहरिया ट्राइब की स्थिति क्या हुई? जो सहरिया ट्राइब 2 जून खाने के लिए तरसते थे, पर्यटन के कारण सहरिया ट्राइब के लोगों की आमदनी, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, जिस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, भारत की सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। सहरिया ट्राइब आज उन 8 चितों के आने के बाद से, 8 चितों के आने के बाद से उनकी पूरी पर्यावरण बदल गई है, जीवन का पर्यावरण बदल गया है। इससे पूरे देश और दुनिया को जानना चाहिए, सिर्फ 8 चिते नहीं आए हैं। भारत के वन्य जीवन के संरक्षण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, और इस महत्वपूर्ण कदम को उन ट्राइब के कंधे पर हम पर बंदूक नहीं चलानी चाहिए। आप जाकर सहरिया ट्राइब से मिलकर आइए, जो नहीं गए हैं जाकर देखें। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का प्रभाव क्या होता है, शायद हम नहीं जानते हैं। यदि यही पर्यटन
बिहार में बोधगया के नाम पर, वैशाली के नाम पर बढ़ गया होता तो जीडीपी 7% बढ़ता। आप पर्यटन नहीं बढ़ा रहे हैं, हम पर्यटन बढ़ा रहे हैं। जहां मौका मिलेगा हम लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वनवासियों के जीवन को सुरक्षित संरक्षित कर रहे हैं। सभापति महोदय, भारत में पूरी दुनिया का 8% वाइल्ड लाइफ है। जो विविधता हमारे जीवन में, वो विविधता हमारे वन्य जीवन में भी है। उस विविधता के संरक्षण में हमें कहां चूक हुई? जब प्रधानमंत्री जी अमृतकाल कहते हैं तो अमृतकाल सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, उन पशु पक्षियों के लिए भी है जिनका भारत शरण स्थल है। हम जिस संस्कृति से आते हैं उस संस्कृति में सिर्फ स्वयं को नहीं देखते हैं, स्व को नहीं देखते हैं, हम स्व में की परिधि को इतना बड़ा करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द आने वाले पशु पक्षी और वनस्पति भी आता है। क्या आपको मालूम है कि ऐसे पशु पक्षी 50% पक्षी विलुप्त हो चुके हैं? क्यों विलुप्त हुए हैं? एक कारण तो प्रदूषण और पर्यावरण का होता है, दूसरा कारण ट्रैफिकिंग का है। दुनिया में जिस प्रकार के ट्रैफिकिंग होते हैं, पहला ट्रैफिकिंग का नारकोटिक्स में है, दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तीसरा फॉरफिटेड चीजों पर है और चौथा जो ट्रैफिकिंग में आता है वह वाइल्ड लाइफ की चीजों का आता है। इसका मार्केट कितना बड़ा है सभापति महोदय? 19.2 बिलियन डॉलर का मार्केट 2021 में इस ट्रैफिकिंग से हुआ है। जो भारत के आंकड़ों में देखा जाए तो खरबों रुपए का ट्रैफिक पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसमें भारत की भागीदारी 20% है। यदि 150 खरब है तो उसका 20% ट्रैफिकिंग भारत से होता है। जब हम उस ट्रैफिकिंग को रोक रहे हैं, जब उस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हम कानून बना रहे हैं, तो उसमें कौन सी संघीय व्यवस्था को क्षति पहुंच रही है? क्षति उन माफिया को पहुंच रही है जो अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को समाप्त कर रहे हैं, जो अपने लाभ के लिए संघीय व्यवस्था को मोहरा बनाकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। उन माफिया को जो वन्य जीवन को समाप्त कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी नहीं है, उनको सीधा सीधा ये चेतावनी है। सभापति महोदय, 1,20,000 प्लांट्स और एनिमल्स इनवेजिव हैं। इनवेजिव प्लांट्स और एनिमल्स उनको कहते हैं जो किसी खास देश का नहीं होकर बाहर से आते हैं। बाहर से आने वाले वे प्लांट्स और एनिमल्स जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को, पर्यावरण को खतरा पहुंचाता है, यानी इकोनॉमी को, इकोलॉजी को और एनवायरनमेंट को जो खतरा पहुंचाता है, ऐसे इनवेजिव प्लांट्स हैं। इनकी संख्या 1,20,000 है जो पूरी दुनिया के 6 देशों में है। उन 6 देशों में भारत भी है। वे देश कौन है? यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है और भारत भी है। यानी 1,20,000 प्लांट्स और एनिमल्स भारत पर भी हैं। उसका मैं एक नाम लेना चाहता हूं। उसका लोटाना कैमरे नाम का एक इनवेजिव प्लांट है जो 1800 ईस्वी में भारत आया था। आज टाइगर रीजन जिसको कहा जाता है, हिमालयन रीजन, उसका 1,54,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये प्लांट्स फैला हुआ है। इसका हमारे क्लाइमेट पर, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनवेजिव प्लांट्स का हमारे सॉइल की प्रोडक्टिविटी घटती है, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी घटती है, हमारा क्लाइमेट परिवर्तित होता है। यदि इन इनवेजिव प्लांट्स को समाप्त करने के लिए बात हो रही है, जो 350 से अधिक आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और 3% ऐसे इनवेजिव प्लांट्स हैं जिनकी अब तक हम जानकारी भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि दशकों से, सदियों से ये प्लांट्स भारत में आते रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर, यू मे कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू। Now I will take up special mentions. श्री विप्लव कुमार देव, मैं पहले सभापति महोदय को प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ मैं राज्यसभा में नया आया हूं
और मेरा पहला दिन है। और जो हाउस में है आप सभी को मैं अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। Honorable member, like you, मैं जानता हूं। no, like you, it is also my first day. Okay. And we both must set very high standards. So we will avail the opportunity on some other occasion. Right now, confining only to the text. Okay. Thank you. स्पेशल मेंशन में मैं त्रिपुरा के संबंध में उठाना चाहता हूं। You'll have to read out the text. राष्ट्रीय धरोहर के रूप में त्रिपुरा में विश्व प्रसिद्ध मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के अलावा उनकोटी, पिलाक, भुवनेश्वर मंदिर और बक्सनगर तरीके अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक स्थल है, जो कि राज्य के पर्यटन को चार चांद लगा सकता है। इनकी देखरेख का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है। संस्था अपना काम बखूबी कर रही है, मगर राज्य में इसका सर्किल कार्यालय ना होने के वजह से कई बार कम्युनिकेशन गैप की स्थिति उत्पन्न होती है। अगरतला में एएसआई का सर्किल ऑफिस होने से इन स्थलों के विकास और प्रचार प्रसार में राज्य के साथ सहयोग बढ़ाने मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्य में स्थित पुरातात्विक जो महत्व के अन्य स्थानों के अन्वेषण और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य पौराणिक स्थलों के खोजने की और विकसित करने का भी सहायता मिलेगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समूचे नॉर्थ ईस्ट का विकास हो रही है। इनके मार्गदर्शन में त्रिपुरा सरकार भी प्राथमिकता के पर राज्य के सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थलों का आरक्षण, संरक्षण, उन्हें संवारने का कार्य कर रही है। पुरातात्विक महत्व के स्थलों को संरक्षण एवं सांस्कृतिक विकास के त्रिपुरा में पर्यटन क्षेत्र का विकास होना होगा। श्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा के पर्यटन के विशेष मानचित्र पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इसलिए राज्य में एएसआई की सर्किल कार्यालय की स्थापना से प्रदेश के पुरातात्विक महत्व और स्थानों को संपूर्ण विकास और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के भारत के अष्टलक्ष्मी के रूप में स्थापित करने के मददगार साबित होगा। सरकार से अनुरोध है कि त्रिपुरा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्किल कार्यालय बनाने का कृपा करें। धन्यवाद। श्री सुजीत कुमार, श्री संतोष कुमार। और अंधविश्वासों के विरोध प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रीय कानून। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 51A वैज्ञानिक समभाव के विकास को हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य बनाता है। इसके बाद भी देश की सभी हिस्सों से काले जादू और जादू टोने की खबरें बड़ी संख्या में आती है। ऐसी कुप्रथाओं के कारण अनेक नागरिकों की मृत्यु तक होती है। ये कुप्रथाओं संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन करती है। साल 2021 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार मानव बलि के कारण 6 जानें गई, जबकि जादू टोने 68 हत्याओं का कारण बना। साल 2020 में जादू टोने के कारण 88 मौतें हुई और 11 हत्याएं मानव बलि के रूप में हुई। वर्तमान भारतीय दंड सहित काले जादू और अन्य अंधविश्वासी प्रथाओं के कारण के लिए अपराधों को रोकने के लिए सक्षम नहीं है। हत्या की सजा देने वाली आईपीसी की द्वारा 308 भी मानव बलि का संचालन का हत्या होने के बाद ही लेती है। भारत के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ आदि ने इन कुप्रथाओं के निपटने के लिए पहले है कानून बनाया लिया है, परंतु अभी भी
ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं है जो विषय रूप से जादू टोना, अंधविश्वासों या तंत्र मंत्र के संबंधित गतिविधियों को कारण किए गए अपराधों से निपटना हो। राष्ट्रीय स्तर पर कानून के अभाव में काले जादू की परिभाषा भी निर्धारित नहीं है। इन सभी कारणों पर विचार कर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक अंधविश्वास विरोधी कानून बनाने की पहल करनी चाहिए जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हो। श्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा। Honorable Chairman, sir, with your kind permission and with the subject line, India's obligations and commitments under human rights conventions. So, every year, the Parliament passes domestic legislation that is consistent with India's obligations under various international covenants. However, India is also a signatory to various other human and socio-economic rights conventions that remain unfulfilled. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR, requires that India to enact legislation to ensure civil and political rights for all citizens without distinction of any kind. The convention also talks about discrimination in the private sphere, such as landlords refusing homes to a certain section of individuals. However, no such legislation has been designed in India. The Committee on Elimination of Racial Discrimination in 2007 urged India to take more effective measures to tackle segregation and denial of equal access to health care and education to Dalits and Adivasis, which persist despite the Atrocities Act. Similarly, India is also a signatory to International Covenant on Civil and Political Rights, which prohibits advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. Despite that, there is no separate legislation or strong laws on mob lynching. Further, under the Genocide Convention, India is obliged to prevent crimes against humanity through international cooperation. However, Rohingyas were expelled from the Indian territory and sent to a place where their lives and freedoms would be threatened. In light of this, I urge the government to honor India's international obligations and bring in necessary legislation and amendments. Thank you, sir. Jai Hind. Shri Binoy Vishwam. Sir, thank you. So my mention is regarding the fraud in union government's welfare schemes. Rampant frauds and leaks in several welfare schemes funded by the union government have meant that the intended beneficiaries bear the brunt and are adversely affected. According to the statement made by the Minister of Agriculture and Farmers' Welfare, over 150 crores of frauds have occurred under the PM Kisan scheme due to ineligible beneficiaries drawing benefits. Several FIRs have already been filed in this regard across the country. Similarly, the Pradhan Mantri Bima Fasal Yojana, a scheme to provide insurance protection to farmers who face crop loss, have given abysmally low sums. Farmers have had to face harrowing distress due to such low payouts. Their distress is further compounded by the frauds done by private insurance companies who have pocketed a large part of the money spent by the central government and state governments. Another project of the union government that was portrayed as one of the flagship schemes was the Pradhan Mantri Awas Yojana, which aimed to aid economically weaker sections of the society in building homes by providing subsidies, home loans, etc. This scheme has also fallen prey to fraud, with the CBI having uncovered thousands of crores of scams where loans have been granted under fictitious and fake names.
Considering this magnitude of scams in question, the government can no longer afford to remain silent. There is an urgent need for the government to immediately conduct an independent audit by the CAG into the working of the schemes, prosecute the culprits, and restructure the schemes to check such frauds. Thank you. Shri GVL Narasimha Rao. Shri Ilnam Ram Karim. Shri Sushil Kumar Modi. Shri M. Sanmugam. Dr. John Bitas. Shri P. Wilson. Chairman, sir, I wish to raise a matter of urgent public importance relating to the revising of the income ceiling limit for OBCs. Chairman, sir, the expert committee headed by R.N. Prasad on 10/3/1993 identified creamy layer for exclusion of socially advanced persons, and the committee submitted a report categorizing the list of creamy layer persons for exclusions from OBC reservations, which was accepted by the DOPT on 8 September 1993 and adopted for implementation of the scheme of reservation for OBC in central services as well as state services. And regarding the exclusion of creamy layer, the income limit threshold was initially fixed at ₹1 lakh in 1993, and the same was increased and last revised from ₹6 lakhs to 8 lakhs in September 2017 by DOPT. The said income ceiling has not been revisited for more than 5 years and does not take into account the inflation and changes in monetary value and time, leading to OBC persons from achieving equality, thereby hampering the goal to social justice. The 3-year period for revision of the ceiling of ₹8 lakhs for OBCs has already ended on 1/9/2020, and therefore it is a dire need of the hour to revise the income ceiling to ₹15 lakhs as per the recommendation of NCBC in 2015, with explicit mention that income from salaries, agriculture, and traditional artisanal professions are excluded from the income test. This will enable the OBC students to apply for admissions in higher educational institutions as well for the government employment from the academic year 2023 onwards. Alongside, the factors determining creamy layer should also be amended to include more than just the economic factors alone. I therefore urge upon the government to take necessary steps for revising the income ceiling limit for the OBC. Much obliged. Honorable members, if the House permits, the sitting be continued till the completion of his special mentions. Shri Abdul Wahab. Sir, my special mention is on minimum pension for ex-servicemen who fought for Bangladesh Liberation War in 1971. In 1971, India and its army played a significant role in the liberation of Bangladesh. However, after the war, many of the soldiers who bravely fought the Pakistan army were forced to retire, citing various reasons. For a long time, these ex-servicemen were demanding for minimum pension and include them in ECHS scheme. On February 22, 2019, our Honorable Prime Minister, though agreed to their request to be accepted for medical expenditures under the ECHS, but the demand for consideration of minimum pension for ORS personnel, other rank service, were not taken into account. I urge the government, particularly the Office of Prime Minister, to consider the demand of all who took part in Bangladesh Liberation War, particularly the other rank service personnel
with a service of 7 years be considered for minimum pension scheme and full coverage under the ECHS medical plan. Thank you. Jai Hind. Shri K.R.N. Rajesh Kumar. The Honorable and respected Chairman, sir. First, I thank you, sir, to allow permitted the special mention after 6 p.m. And I am also convey my wishes to you. This day is in your life is a historical day. First session of this day of in Rajya Sabha. Yeah, my special mention in the smart education and the telemedicine program at Kolli Hills for the tribal population under the Article 270/1, Namakkal district in Tamil Nadu. The Kolli Hills in Namakkal district, Tamil Nadu is full of tribal population. Approximately 35,000 people living in 14 hamlets, villages at an altitude of 4,500 feet, spread across approximately 280 kilometers. These people does not have access to proper internet connectivity and network coverage, which in turn affect their daily life. People from this village are climbing up and down daily for their medical, commercial and another needs, assessing employment and job portal, receiving the email communications, internet banking facilities, online education are a nightmare for them. Under Article 275(1) of tribal development grants, to develop their livelihoods and to bridge the gap between scheduled tribe population and others, to accelerate development of STs by ensuring education and health needs. The Chief Secretary of Tamil Nadu sent a proposal to develop the infrastructure to attain the below goals, giving a high-speed internet connectivity through long-distance wireless points, and monitoring the tribal student through online interaction from different parts of the world by experts to bring them at par with urban students, connecting primary health center to give telemedicine facilities with the help of the community assistants, the addressing the many nutrition and another basic health issues for tribal student and the community. The total estimate for the 122 hamlet village places, approximately 5 crores and 0.69 lakhs. I humbly request the Honorable Minister of Tribal to via the Honorable Chairman in this special mention under the 180A to approve the allocate funds for this project for the betterment of the ST people at Kolli Hills, Namakkal district, Tamil Nadu under the Article 275(1) of tribal development grants. Thank you, sir. Shri Mujibullah Khan. Shri A.A. Rahim. This opportunity. The HLL Life Care Limited is a Government of India owned public sector undertaking in Thiruvananthapuram, Kerala. It produces various healthcare products and its brand have large market share in the country and abroad as well. Hindustan Latex Limited has its head office in Thiruvananthapuram and factories in 7 locations across India. 4 of the factories were built in Kerala, such as Perurkada, Akkulam, Kakkanad and Airapuram. The rest 3 factories are in Belgaum, Manesar and Indore. HLL currently has 220 pathology labs, 47 imaging centers and 6 labs under the brand name Hind Labs. It runs a total of 253 pharmacies across our country. HLL runs a subsidiary with the name of HLL Infratech Service Limited. In 2020-21, the company reported a turnover of rupees 5,081 crore. It is employing thousands of persons across states. The HLL also played a key role in providing assistance during the COVID pandemic. This was particularly possible as it is a public sector unit and is not operating merely to make a profit but
to serve a public purpose. Hence, Hindustan Latex Limited must not be disinvested and privatized. HLL factory in Kerala is situated on land given by the state government in view of advancing the private sector. Given that circumstances, Kerala has the right to retain HLL as state public sector unit that's free from the center's hold. The land and assets owned by HLL should therefore be returned to Kerala, or alternatively, the state should be allowed participation in this auction. Thank you, sir. Dr. Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir. So I rise to make this statement relating to demand for revising the sharing pattern of centrally sponsored schemes for Orissa. So inter and intra-state regional imbalances stem from an asymmetric growth exacerbated by historical socio-economic backwardness of vulnerable groups, calling for the focused attention of the government. The aspirational districts of program is a step in that direction, with Orissa having 10 out of those 112 districts. However, without any budgetary allocation and delinking 8 centrally sponsored schemes will have a steep increase in the state's share. An immense financial burden has been imposed on the Orissa's exchequer. Further, the unique geoclimatic conditions of Orissa make it vulnerable to multiple natural disasters. The total financial losses incurred by Orissa due to natural calamities from 1994 to 2019-20 amount to 85,313 crore. As per the Revenue and Disaster Management Ministry of Odisha, the state incurred a loss of over 1471 crores to cyclones in 2020-21 alone, impacting over 60 lakh lives, and this is exclusive of the losses of capital assets. Honorable Chief Minister Naveen Patnaik, representing 4.5 crore people of Orissa for the last 22 years, has been demanding natural calamity to be included as a criterion for special category status, or have the status of special focus states with benefits at par with northeastern and Himalayan states. Thus, sir, through you, I urge the central government to rework the sharing patterns of centrally sponsored schemes in line with the geoclimatic, economic, and sociological necessity of states like Orissa. A special allocation should accompany this on developing disaster-resilient power infrastructure with underground cabling connections and a coastal embankment for guarding against ocean water surges. Thank you, sir. Shri Sanjeev Arora, Dr. V. Shivdasan. Here, my special mention on Kannur railway station. Kannur railway station, situated at the heart of the city, is an important gateway to the historic land of Kannur. Kannur has one of the largest network of cooperatives in India, and the district has an educated and skilled population. Kannur is unique in having largest network of public libraries in India. The land has immense tourism potential, as the less explored areas of the district is attractive to those who pursue experience tourism. The railway station at Kannur becomes an important connecting point in ensuring outward and inward mobility, and hence there is a need to develop it to international standards. The government should pay a special attention to the railway station by improving the facilities which are quite minimal now. A railway station of international standards will be a great boost to the economical potential of the land of looms and lords. The development of Kannur railway station will also enhance the potential of the Kannur airport. A synergy of all these avenues of mobility will help in the all-round development of Kannur. The immediate action by the railways in this regard is essential for the land to achieve its true potential. Thank you for this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Dr. Fawzia Khan. Thank you, Chairman, sir.
Mike, thank you. A study conducted by Toxics Link, a Delhi-based NGO in November, concluded that 2 of the most popular sanitary pads of the country contain 6 kinds of phthalates. Phthalates are most popularly employed as plasticizers in several products, referring to chemicals that ensure a product is soft, flexible, and has reduced friction on the surface. Their usage has dominated the production of plastic products for a long time now, sir. Their presence in sanitary pads can induce endometriosis, complications in pregnancy, underdevelopment of the fetus, hypertension, etc. The presence of VOCs used to add fragrance has further alarmed the situation, as they can potentially have harmful effects on human health. These chemicals are easily procured by the manufacturers due to a loophole in the Bureau of Indian Standards 1980 prescribed test. This test is to evaluate the absorbent filters and pad texture, but remains silent on the toxicity of ingredients so utilized, sir. The optional nature of the test, which determines the toxicity of the ingredients, is also witnessed in the US food and drugs regulations and in countries like France, Australia, and China. Hence, a structured approach accompanied by a study or a test of the sanitary pads available in the market should be our top priority. The consumers should be made aware of the presence of such chemicals by labeling these products. It is high time that the government commences to improve and strengthens the standards prescribed, suiting the modern-day scientific advancements, which would ultimately protect the women and the mothers of our country, sir. Thank you. Shri Ajay Pratap Singh. Dr. John Britas. Sir, Honorable Chairman, thank you very much. And please don't take objection to what I'm going to say now, because this is with regard to the role of governors and center-state relations. Dr. Ambedkar, during Constituent Assembly debates, referred to the governor's position as ornamental and said that he has no functions which he can discharge by himself. Article does not confer power to overrule the ministry on any particular matter. According to the principles of the new constitution, he is required to follow the advice of his ministry in all matters. I am quoting Dr. Ambedkar, unquote. Sir, 73 years later, the status quo is anything but what has been envisaged by the framers of the constitution. Sitting on a bill passed by the assembly, instead of ascending or returning it for reconsideration as soon as possible, as per Article 200, misquoting the limited discretionary power of governors under Article 163, etc., are common occurrences these days. Sarkare Commission, MM Punji Commission, National Commission to review the working of the Constitution, as well as the Supreme Court, have all stressed over the years the importance of governor as an autonomous and impartial agent who would serve as a bridge between the state and the center. Various commissions also recommended for introducing the procedure of consultation with the state chief minister in the selection of governors and time limit for taking decisions by governors on granting assent or reserving a bill for consideration of the president or returning a bill for reconsideration. But none of these recommendations have been accepted by the government in letter and spirit so far. I urge upon the government to take urgent steps to implement the recommendations of the said commissions vis-à-vis the governors for upholding the principles of the Constitution and ensuring harmonious relations between centre and state, sir. Thank you very much, sir. I think everyone has had it.
Honorable members, the House stands adjourned to meet at 1100 hours on Thursday, the 8th December 2022. आज हम आपको संसद भवन में मौजूद एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में। इस डिपार्टमेंट को मिनी इंडिया भी कहते हैं और इस डिपार्टमेंट का काम होता है अलग अलग क्षेत्रों से आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच की दूरी को कम करना। ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट कहें या भाषांतरण विभाग, इसका काम होता है प्रोसीडिंग्स के दौरान सदन में बैठे हर मेंबर तक किसी भी भाषा को इंटरप्रेट करके पहुंचाना।